other students. So इसमें I normally put it under two categories. First is what to write. Our basic problem becomes we do not understand what the question is asking and what we are writing. We write what we know. We don't write mainly sometimes what is asked. So we need to first understand what to write, and then the second part is how to write. Now people will be saying, sir, what to write तो समझ में आता है कि हमने कुछ उल्टा फुल्टा लिख दिया हो गया. How to write मतलब how to write basically means how you present your answer in the examination for theory as well as for your practical solutions. So many people over here would be feeling ki sir, each answer would depend basis the chapter it is asked from, and that's how we present it, right? How many of y'all have such a thought in your mind that presentation will change chapter to chapter or maybe even question to question from the same chapter? Y'all can answer through your responses in the comments section. कितनों को ऐसा लगता है कि चैप्टर चेंज हो गया तो हमारा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, आंसर चेंज हो जाएगा, वी कैन नॉट स्टैंडर्डाइज ऑन समथिंग? अमन को लगता है ऐसा, बाकी और कोई? There'll be many of you all who will feel this thing, right? But Kiran Rao doesn't feel this way. So okay, he agrees that अगर फॉर्मेट से करे आंसर तो चल जाता है. Here, let me draw clarity to the concept that a chapter, majority of it can be standardized into a format, be it any subject, be it your practical subjects or be it your theory subjects. Chapters can be standardized, and accordingly, you all can prepare a format per chapter which will work for nearly all the answers of that chapter. Best example of this that I can take is consolidation of financial statements. How many of you all have studied or understood this chapter if you all are May 25 attempt? Kiran knows this chapter, Sumant knows. Okay, so इस chapter में तुम करते क्या? What do you do in this particular chapter? You all prepare your balance sheet or you all prepare your P&L account if it's a consolidated P&L sum. उसके बाद क्या करते? Anyone wants to answer? Notes. What notes? Vignesh, Kiran, you all are saying notes. Notes, I understand, is notes to accounts. Notes to accounts में कौन से notes बनाते हो? Your first note will be of bargain purchase. Then you have your reserves of subsidiary, reserves of holding. Then you have your minority interest. Then you have your note for goodwill. That is what I said, goodwill or bargain purchase. So वो note भी आता है. Can I say all of these are standardized notes? Yes. Cost of control. Standardized हर सम कंसोल का है तो ये notes तो बननी है majority cases में. So a standard format or template has been made. So when you start attempting a console question other than an MCQ one, if it comes as a solving question, MCQ आएगा तो तुम fair में ये सब notes वैसे भी नहीं बनाओगे because you won't have the time. If it comes as a question, your first thing will be to make your schedule 3 balance sheet or P&L. Then you will start with your notes to account. जहाँ पर ये 5 notes तो बननी है, right? So standardize the particular chapter in such a way कि ये 5 तो बननी है. Now when it comes to theory chapters में क्या होता है? We get confused कि भाई अभी ये आंसर कैसे लिखे? If you would have seen ICAI trend from past many attempts, what do you see the category of questions to be like in a theory paper, say like an audit? More like a direct question or it's more like a case study based question? Here I'm talking about the descriptive part of your paper, not the MCQ part. Case study मतलब तुमको basically क्या करना है? You have given a story, you have to understand that particular story, you have to understand the issue in that story, then you have to apply the relevant provisions,
and then you have to go ahead and give your answer based on the story, right? यही कुछ होता है. विघ्नेश इज सेइंग यस, किरण का हैंड्स अप आया हुआ है. व्हाट अबाउट अदर्स? सो रहे हो क्या सब सुबह सुबह संडे को? सुमंत इज सेइंग यस, अनिल इज सेइंग यस, रेहाना हैज रेज्ड हर हैंड. ओके, मतलब जाग रहे हो. सो आइडियली अगर फॉर्मेट बनाना है फॉर अ थियरी आंसर, कैन आई से वी कैन फर्स्ट हैव फैक्ट्स ऑफ द केस और द इशू अंडर कंसिडरेशन. कितने लोगों ने स्कूल में साइंस एज अ सब्जेक्ट लिया हुआ था? वहां पर प्रैक्टिकल्स आते थे. स्कूल में तो साइंस सब्जेक्ट था ही ना. लाइक व्हाट अ लेम क्वेश्चन. वहां पर यू यूज्ड टू हैव प्रैक्टिकल्स. प्रैक्टिकल में एक जर्नल बनानी होती थी, याद है? जर्नल में पहली चीज क्या होती थी? ऑब्जेक्टिव और फिर एम आता था. व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट? व्हाट इज द एम यू वांट? व्हाट इज द apparatus used? what were the procedure followed? what was the observations and what is the conclusion? ऐसा कुछ स्कूल के दिनों का याद आ रहा है? मेकिंग गैसेस, लाइक इफ यू वर केमिस्ट्री स्टूडेंट से H2SO4 बनाना पड़ता था. इट यूज्ड टू कम इन द 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल, राइट? ऐसा कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है? जैसा सीए एग्जाम में तुमको एक ही आंसर याद करना होता है और वही जब तुम आंख बंद करते हो तो धुंधला धुंधला दिखता है, वैसे ये भी कुछ धुंधला धुंधला याद आ रहा है कि ऐसा ही कुछ होता था? मयूर आप बस हंसते रहो, बस बेचारे बच्चों की बैंड बजाओ हंस हंस के. बट कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर linkage over here, there we used to have a standardized format for a practicals, right? Here also, if I can say, your case study is nothing but a practical scenario situation of the given provisions that you are studying. You just have to invoke the applicable provisions and then link it to the case. So can we try to develop a standardized procedure for this? Can we? Yes or no? Yes. So first step, let's standardize it as writing the facts of the case and the issue under consideration. Any question come what may, right? Your second paragraph should be applicable provision bracket S. अभी मैंने ऐसा क्यों लिखा? Why would I have written provision bracket S? Can anyone explain this to me? देखो आंसर सब तुम ही देने वाले हो. तुमको खाली ये याद दिला रहा हूँ कि आंसर ऐसे देते हैं. लाइक हाउ इन द मूवी 3 Idiots आमिर खान टेल्स बमन ईरानी. मैं आपको पढ़ाना नहीं सिखा रहा हूँ, वो आप मुझसे अच्छा जानते हैं. मैं तो आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि पढ़ते कैसे. सिमिलरली मेरे से ज्यादा डिटेल्ड में आंसर तुमको पता है. ऑब्वियसली आई हैव गॉन थ्रू दिस फेज जहाँ मैंने भी आंसर्स लिखे पेपर में, बट आज की तारीख में you all would be in a better situation to answer the questions, right? So आंसर्स तुमको याद है, मैं तो तुमको खाली इतना बता रहा हूँ कि आंसर्स लिखने कैसे. Now Vignesh is saying it can have more provisions. Correct. There can be one provision. There can be 7 provisions in a question. Rehana is saying one question में एक दो और more provisions पूछे होंगे. Yes, there can even be 5 provisions in a question. Same format for audit also. Yes, this we are talking about theory formats. DT हो, IDT हो, जहाँ पर theory based answers है. Like if you have a total income question, obviously ये format नहीं follow कर पाएंगे. वहाँ पर हमारा total income का format आएगा. But where we have case study based questions in any subject under the descriptive section, we will try to follow this particular provision. For example, in audit, I always take this particular example of fraud. Fraud में क्या क्या उगता है? Now I will need your assistance in writing down which sections can you possibly think of when a question of fraud comes in. फिर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन फाइनेंस. 148(12) कौन सा सेक्शन है? हार्ट अटैक मत दो. इट्स 143(12). गलत है मत लिखो प्रोविजन, क्योंकि पूरा लिखने के बाद भी आंसर मिलेगा 0. और कुछ याद आ रहा है? कारो और कुछ? इफ आई टेल यू इट्स अ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी में लोचा है तो
143.12 deals with auditor provisions for CG only, correct, the amount of fraud and the CG. मैं बोलूँ लिस्टेड कंपनी, तो लिस्टेड कंपनी को कुछ ऐसा याद आ रहा है, इंटरनल कंट्रोल्स आर मैंडेटरी. What about foundation? In foundation also, when it's theory, you should ideally follow the same particular format. But तुम इतना डिटेल में नहीं लिखोगे, you will try to summarize and make it shorter. Clear? किसी को IFC रिपोर्टिंग याद नहीं आया? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, ऐसा कुछ था, याद है? याद नहीं है? हाँ, रेहाना को याद नहीं आया, बट ऐसा कुछ हो सकता है. इंटरनल ऑडिट कंट्रोल के लूप होल्स हो सकते हैं जिसकी वजह से तुमने कुछ ढूंढा, और व्हाट कुड गो रॉन्ग. एप्लीकेबल प्रोविजन पॉइंट वाइज लिखना है या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, दैट डिपेंड्स ऑन यू. इफ देयर आर मेनी प्रोविजंस यू कैन जस्ट राइट डाउन द सेक्शन एंड देन से दिस माइट अप्लाई, हियर द प्रोविजन सेज दिस, हियर द प्रोविजन सेज दिस. इफ इट्स वन और टू देन यू कैन राइट इट इन पैरा फॉर्मेट आल्सो, करेक्ट. आईएफसी आ सकता है. फिर इन सब का इफेक्ट जो हम नॉर्मली हमेशा भूल जाते हैं लिखना, 705 706 में आ सकता है. So these all are the provisions which might get invoked in a question on fraud. Now, when we say applicable provisions, उसमें लिखना क्या है? Here, I will write down what section 143(12) of Companies Act 2013 has to say. I will write down what is SAR 240 saying in this particular context. I will write down what is the CARO provision reporting which is required. I will write down what is the IFC procedures telling if internal controls also were invoked in the case study. I will write down what does SAR 705 or 706 say about forming an opinion on audited financial statements. ये सब मैं जो एक्चुअल प्रोविजन में लिखा है वो यहाँ पर लिखूंगा. That means you will write and explain the provision. समझा? Fact means answer related to question. Facts मतलब क्वेश्चन ने क्या बोला है वो तुमको लिखना है. Nothing to do with the provisions as of now. Clear? अभी तुमने क्या किया? पॉइंट 1 में फैक्ट्स लिख दिए केस के, और पॉइंट 2 में यू इन्वोक्ड ऑल द प्रोविजंस दैट आर एप्लीकेबल टू द केस. नाउ इन पॉइंट नंबर 3 you will do the linkages. What does linkages mean? Linkages का मतलब क्या होता है? You will link every provision that you stated to the given facts of the case. When you are writing point number 2, तब तुमको कुछ भी केस से लिंक नहीं करना है, तुमको वहां पर सिर्फ बेयर प्रोविजन लिखना है. When I say bare provision, it does not have to be word to word what the standard says or what the section says, notwithstanding anything contained under section 143 of the Companies Act. As per 143(12), an auditor should report. ऐसी कुछ भाषा सुनी होगी, ये लिखने नहीं बोल रहा हूँ. But as per section 143(12) of Companies Act 2013, an auditor is required to report fraud to the CG if XYZ happens. You have to at least write down the words of the section. It does not have to be exactly a copy paste of the section, but important words, important verbatims, those need to be written down in point number 2. Clear? Point number 3 में तुम जाके हर एक चीज को कहां से लिंक कर रहे हो? फैक्ट्स ऑफ द केस से. इन सब में पॉसिबल है कि प्रोफेशनल एथिक्स भी इन्वोक हो जाए. जस्ट अ थॉट. Can professional ethics be invoked in a fraud related question? जाग रहे हो कि सो गए सब? Yes. So in that particular case, even professional ethics can get invoked. Professional ethics का कौन सा सेक्शन या कौन सा क्लॉज याद आ रहा है तुमको जो इन्वोक हो सकता है? Which schedule, which part, which clause number? ऐसा कुछ याद है कि ये भी धुंधला धुंधला है कि मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ सर, आई एम ट्राइंग टू रिकलेक्ट, बट दैट सेम क्लॉज इज ब्लर्ड इन माय आईज. बाकी ऊपर नीचे सब दिख रहा है. ऐसा कोई क्लॉज याद है जो टॉक करता है अबाउट डिसरेप्यूट टू आईसीएआई?
ऑडिटर को फ्रॉड पता चला बट उसने रिपोर्ट नहीं किया, ऐसा भी केस हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस और नो? अगर वैसा केस आया, so what will, yes, even professional skepticism is a clause that comes in. Professional skepticism कौन सा स्टैंडर्ड बोलता है करने का? ये भी इन्वोक हो सकता है, SQC1 and SAR 200, राइट? डिसरेप्यूट टू ICAI भी इन्वोक हो सकता है क्योंकि ऑडिटर ने अपना काम ढंग से नहीं किया. दैट कैन ऑल्सो बी अ पॉसिबल केस स्टडी विच माइट कम इन अ क्वेश्चन. तो 240 प्लस ये करना है, तुमको बोलना पड़ेगा 240 में ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसने ये नहीं किया और बाद में किसी ने ये चीज रिपोर्ट कर दी ICAI को. So by doing this misconduct, the chartered accountant has brought professional, what do you say, disrepute to the ICAI by not having a sense of professional skepticism, due diligence, due care, XYZ. So basically, मैंने ये सब जब invoke किया है, can I say my answer is complete, not correct? अभी सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, complete और correct? Guess करो. What does complete mean and what does correct mean? करेक्ट में सपोज मैंने सिर्फ SAT 240 लिखा और 143 लिखा, कैन एनीवन टेल मी माय आंसर इज रॉन्ग? नहीं, कंक्लूजन पेंडिंग ऑब्वियसली. चलो, ऑन फोर्थ में तुम कंक्लूड करोगे कि सही किया कि गलत किया. 140, आई एम कमिंग बैक टू 143 एंड 240. अगर सिर्फ इतना लिखा, कैन एनीवन टेल मी कि मैंने आंसर रॉन्ग लिखा है? नो. बट क्या कोई मुझे ऐसा बोल सकता है कि आपका आंसर कंप्लीट नहीं था क्योंकि इसमें तो प्रोफेशनल एथिक्स भी इन्वोक हुआ, इसमें तो IFC भी इन्वोक हुआ होगा, SAT 200 भी शायद तक इन्वोक हुआ होगा? Yes, obviously it should be related to the case study. So I am giving a hypothetical example जहाँ पर ये सब उस case study से invoke हो. Complete means interlinking every possible thing which might come up in the case and give an effect on your conclusion. ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टैंडर्ड्स का क्वेश्चन है तो SAT 240 आएगा, उसके साथ कारो भी आ सकता है, 143 भी आ सकता है, SAT 205 705 706 भी आ सकता है, SAT 200 भी आ सकता है, IFC रिपोर्टिंग भी आ सकता है, प्रोफेशनल एथिक्स भी आ सकता है. सो व्हेन whatever is possibly getting invoked in a question that is interlinked and written, that is when we call the answer is complete in all respects. Correct तो तुम ये दो लिख के भी correct हो जाओगे, but maybe your answer is not complete in all respects. Clear? So conclusion obviously will be dependent on how you've linked the facts to the case, what provision you have invoked, and basis that what is the conclusion. But your conclusion also has to be, like I said, complete in all aspects. अब बहुत सारे students का, like when I was getting doubts for students who've written prep का papers for this attempt, बहुत सारे students का ये doubt आ रहा था कि सर हमने आंसर कुछ और लिखा है बट हमको wrong दिया गया है. कितने लोगों के साथ by writing any test paper ऐसा कुछ होता है कि सर हमारा आंसर सजेस्टेड आंसर से मैच नहीं हो रहा है इसलिए हमको wrong दिया गया है? कितनों को ऐसा होता है? Does anyone feel this or no one feels this? अमन फील करता है, किरण फील करता है, रेहाना मीन AFM. ओके, सो जब ऐसा होता है व्हाट डू यू एंड अप डूइंग? Let me tell you one beautiful thing about theory subjects as well as practical subjects. If you invoke a correct provision or a correct method which may be applicable to the question, but examiner ने दूसरा method invoke किया है, then even your method, if you have solved it properly or written the provisions properly and given a proper conclusion basis your invocation of provision, that also is a correct answer. उसमें भी marks मिलता है. So like we say, there is no one answer. Format applicable is applicable 2 to 3 mark question. When it's a descriptive question, always try to apply the format and write the answer. In my attempt, when I gave November 2017 attempt, in the paper of law and audit, we had 4 mark question number 3C, if I'm not wrong, each having 4 independent cases under that for 1 mark each, under descriptive section. और हमको एक एक मार्क के लिए भी फॉर्मेट में आंसर लिखा था.
So it depends on how the paper is framed, and in that particular case, you have to write when it's a 1 marker question or a 2 marker question, you need to invoke the most applicable provision. इस पे directly क्या apply? Clear? So coming back to what I was saying, that when you link the provisions or when you write a different provision or follow a different method from solving, it is possible your method may be correct if you have done it properly and you will get your marks. Again, coming back to consolidation, when it is chain holding, कितनों को ऐसा सम दिखता है, आई एम होल्डिंग 70% इन बी एंड बी इज होल्डिंग 60% इन सी? ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट याद है? नॉट गोइंग टू द निटी-ग्रिटीज ऑफ द सॉल्यूशन, आई जस्ट वांट टू इन्वोक अ पॉइंट ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसके लिए बोल रहा हूँ. हाउ मेनी ऑफ यू ऑल नो सच अ कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट इन कंसोलिडेशन? रेहाना नोज. और किसी को आता है, नहीं आता है? सुमंत नोज. यस. वहां पर टेल मी वन थिंग, जब आप कंपनी सी के रिजर्व्स क्लोज कर रहे हो, दैट इज रिजर्व्स ऑफ सब्सिडियरी सी, व्हाट आर द टू मेथड्स व्हिच यू कैन अडॉप्ट? Who wants to answer this particular part? ये टाइप करके आंसर नहीं होगा तो anyone wants to unmute themselves and answer this particular question कि कौन से मेथड आप अप्लाई करोगे यहाँ पर? है कि नहीं है लोग? चलो, याद नहीं आ रहा, आई रिमाइंड इट टू यू ऑल. एक मेथड है कि तुम उसके रिजर्व्स कहां पर लेके जाओ, बी में लेके जाओ 60%, माइनॉरिटी में लेके जाओ 40%, राइट? एंड देन यू क्लोज कंपनी बी. उसके बाद तुम बी से ए में कितने लेके आओगे? 70%, और बाकी माइनॉरिटी में लेके जाओगे कितने? 30%. ऐसा कुछ आता है? Does anyone remember something like this? अब सबके रिएक्शंस बंद हो गए. Am I speaking Greek, Latin? बानू इज सेइंग नो सर. मतलब याद नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ किया ही नहीं है? ऐसा कुछ किया किया याद लग रहा आ रहा है? दिस इज से वन मेथड. और दूसरा मेथड क्या है? ऐसा कुछ याद है? 42% of C's reserves you will directly take to A, and बाकी 58% you take to minority, and 70% of reserves of A you will take to 70% of reserves of B you will take to A, and balance 30 to minority. ये दो मेथड्स को धुंधले धुंधले याद आ रहे हैं कि नहीं याद आ रहे? एंड हम हमारी कृपा से इन दी एग्जाम कौन सी मेथड करके आते हैं बताओ, जो मैंने एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेपर में देखी है, वो मैं रेड से कर रहा हूं. हम यहाँ से 42% रिजर्व्स लेके जाते हैं, फिर यहाँ से 60% भी लेके जाते हैं, और यहाँ से फिर 70% भी लेके जाते हैं. हम सब रिजर्व्स इधर उधर लेके चले जाते हैं, और फिर हमारी बैलेंस शीट कभी टैली नहीं होती, और फिर हम एग्जाम में सोचते रहते हैं व्हाई माय बैलेंस शीट इज नॉट गेटिंग टैली. एनीवन फेसेस दिस इशू? Many might be facing this issue. Now, why I raised this as a particular aspect in the question? मैंने ये क्वेश्चन क्यों उठाया? Because if you see, आपका रिजर्व्स एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अमाउंट अंडर बोथ द मेथड्स बाइफर्केशन वाइज विल बी डिफरेंट. दो टोटल विल बी सेम, दोनों का बाइफर्केशन अलग हो जाता है, राइट? सो अगर तुम मेथड 1 भी करोगे ना तो तुम्हारा आंसर राइट है, मेथड 2 भी करोगे तुम्हारा आंसर राइट है. इट ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट अप्रोच यू हैव फॉलोड. मेथड 3 बना के अपनी लेके जाओगे, आईसीए पक्का रॉन्ग ही देने वाला है. क्लियर? नाउ सुमंत इज सेइंग नो, आई विल फिगर इट out while calculating minority interest. But what will you figure out? I didn't get your question. Can you unmute yourself and explain so that others will also understand what you are doing? Are you there, Sumant?
Chalo, but when we go to the Q&A session, that time you can ask if you are feeling free at that time. Clear? So दोनों में से कुछ भी करो आंसर राइट होगा. सेम लॉजिक अप्लाइज फॉर थियोरी क्वेश्चंस आल्सो. अलग प्रोविजन इन्वोक किया आंसर राइट हो सकता है, दूसरा प्रोविजन किया आंसर राइट हो सकता है. लाइक इन एएफएम यू वुड एट मेनी टाइम्स सी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आता है. सम पीपल जस्ट राउंड इट अप. 12.35 आया, सो दे माइट राउंड इट अप टू 12.35 एफ प्लस आया, तो वो लोग क्या करेंगे 13 एफ कॉन्ट्रैक्ट्स. वो क्या करेगा 12 एफ कॉन्ट्रैक्ट्स लेगा. इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग hedging the balance portion by forwards, then both answers are correct. तुम 13 कॉन्ट्रैक्ट्स लोगे तो भी तुम्हारा आंसर राइट है, 12 कॉन्ट्रैक्ट्स लोगे तो भी तुम्हारा आंसर राइट है, बिकॉज द कैलकुलेशन नंबर विल ऑब्वियसली चेंज. इफ क्वेश्चन इज स्पेसिफाइंग कि तुमको ऐसा 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 ही करना है, यू हैव टू hedge the unhedged portion in forward market, तो फिर आंसर 13 नहीं ले पाओगे. फिर आंसर 12 लेके 0.35 का इक्विवेलेंट एक्सपोजर विल हैव टू गो अंडर फॉरवर्ड्स. इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, then both answers are correct answers. So keep this thought process very clear in your mind कि whatever you will invoke, if question is silent, then if the invocation is correct, you will get your marks, even though if the answer is not matching as per suggested answer. Clear or not clear? Answer. Now someone has a very interesting question. Sarfaraj is saying आंसर लिखने के टाइम पे सा का रेफरेंस कैसे कॉन्फिडेंट वे में लिखे जब याद नहीं होता पूरा. याद नहीं है मत लिखो. एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, सिंपल. नंबर में शक है, नंबर याद नहीं आ रहा, नंबर याद है स्टैंडर्ड का नाम याद नहीं आ रहा, मत लिखो. rather than writing something which is wrong and getting a complete zero, better to avoid writing it and just write as per applicable standards on auditing, as per standards on auditing, as per the provisions of Companies Act, as per the provisions of CARO. अगर नाम याद नहीं है और सिर्फ नंबर याद है तो सिर्फ नंबर लिखो. एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग नंबर 240 और एज पर सा 240, एज पर सा 550. ऑडिटर शुड कंसिडर मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन एज पर सा 505, 705 और 706. इतना लिख के छोड़ दो. नहीं याद है गलत मत लिखो, बिकॉज इवन व्हेन वी टॉक अबाउट राइटिंग द स्टैंडर्ड नेम्स, आईसीआई एक्सपेक्ट कि जो स्टैंडर्ड का एग्जैक्ट नाम है तुम वही लिखो. 99% केस में वो नहीं हो पाएगा. सो इफ यू डू नॉट रिमेंबर योर सा नंबर, और इफ यू रिमेंबर द सा नंबर बट नॉट द नेम, don't write the name, just write the number and come ahead. Clear? Same logic will apply in DT and IDT. If you do not remember the section number, do not write. If you do not remember the subsection number, do not write. If you only remember section number but don't know what it deals with, just leave it at that section number. अभी किसी का क्वेश्चन आएगा सर 40A 3A पे क्वेश्चन आया है तो ऐसे सेक्शंस याद है डीटी में कुछ आते हैं 40A 3A 40A 3 और नो वन रिमेंबर्स, या ग्रुप 2 वाला कोई है ही नहीं. यहाँ पर तुम सिर्फ 40A लिख के नहीं छोड़ सकते. In such particular sections, you will have to write section 40A 3 at section 40A 3A. Yes, it is about cash disallowances for expenses exceeding rupees cash payment 10,000 in cash in a single day to a single person. But for transporters, that limit is 35,000. Right? ऐसा कुछ याद आ रहा है? वो सेक्शन 40A 3A में लिखा है कि एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 40A 3A में लिखा है ट्रांसपोर्टर्स का लिमिट? याद करो. अभी 40A 3A याद आ गया, 10,000 याद आ गया, but where is the limit of 35,000 present? Rishika has gone into much detail. Rule 6DD. The answer is correct, but Rule 6DD of Income Tax Act or Income Tax Rules? GTA सर्विस, आईडीटी नहीं, मैं डीटी के एस्पेक्ट से बोल रहा हूँ. ये आईडीटी में भी आता है, ये अंडरस्टैंड, बट फ्रॉम अ डीटी पर्सपेक्टिव, इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव, this is Rule 6DD, assuming what you said is correct, is from Income Tax Act or Income Tax Rules? This is from Income Tax
रूल्स, ये रूल्स किस साल में आए थे? Anyone remembers when income tax rules had come into effect? अमन का कहना है 1961। तो इनकम टैक्स एक्ट कब आया था? 1936, 1962? चलो, I'll make it an MCQ question. When had Income Tax Act come into picture? Income Tax Act is 1961, but your income tax rules are 1962, not 1961. Don't end up making this mistake. तुम एक्ट का नाम लिखते लिखते अगर उसका ईयर भी गलत लिख दोगे, you will get a 0. Clear? Only write it if you are super confident that what you are writing is correct. 0.01% भी डाउट आया है, मत लिखो. The rules came into effect from 1st April 1962, but we normally write it as per Rule 6DD of Income Tax Rules 1962 as amended from time to time. अब मैंने as amended from time to time क्यों लिखा? Because you cannot practically remember in which year which amendment had come in which rule. So you are giving reference to Rule 6DD, you are giving reference to the Income Tax Rules 1962, and you are saying that the limit is as per Rule 60DD, which has been amended from time to time by the government by notification in the official gazette or as per the applicable Finance Act amending the rules. This will make your paper stand out from the other. इधर उसके पास स्कोप बचेगा ही नहीं to deduct your marks. समझा? नॉर्मल स्टूडेंट्स में तुम क्या लिख दोगे? एज पर रूल 6DD, और वो भी रूल 6DD याद रहा तो. इफ यू डोंट रिमेंबर, as per section 48(3), a limit for transporters is 35,000. This is a transporter, he has made payment of 20,000, that should be allowed. क्लियर? इतना कोई लिख के आ जाओगे तुम. 4 मार्क्स क्वेश्चन में मार्क्स मिलेंगे कितने? ऐसे लिख के आओगे. Ideal marks should be 4 if it's a 4-mark question, and trust me, ICAI gives full marks in theory. तो जितने लोगों ने ये अफवाह और रूमर्स फैलाए है, ICAI never gives full marks. I can say I'm a living example of not just getting one answer as full marks, but many answers as full marks in my theory papers. So the myth that is there कि ICAI full mark नहीं देता, वो दिमाग से निकाल ही लो. करेक्ट है, प्रॉपरली लिखा है, प्रॉपरली प्रेजेंटेड है, एप्लीकेबल प्रोविजंस आर इन्वोक्ड, एप्लीकेबल फॉर्मेट्स आर मेड, you will get your full marks. No one can stop you from getting the full marks in the examination. इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किरण is saying क्लियर है. और किसी के लिए कुछ क्लियर है? नहीं है. बानू के लिए क्लियर है. अनिल, ओके. So basically now when you will write down your paper, can I just quickly summarize whatever we discussed? अब फुल मार्क्स नहीं मिलता, एवरेज मार्क्स मिलता है, बहुत टफ चेकिंग होता है. दैट डिपेंड्स हाउ यू रिटन द आंसर. दैट इज व्हाई आई सेड नॉर्मल स्टूडेंट खाली इतना लिख के छोड़ देगा. एक रैंकर स्टूडेंट में, और अ स्टूडेंट हु गॉट अ एग्जाम्पशन और 70+ इन अ सब्जेक्ट, ही माइट हैव रिटन इट इन अ वेरी पर्टिकुलर, व्हाट डू यू से, फॉर्मेट, या उसने ऐसा कुछ लिखा होगा व्हिच हैज गिवन हिज पेपर एज ओवर द अदर्स, इसके लिए मे बी ही हैज गॉट दैट 70. आप 3 hours कैसे डिवाइड करते थे? I'll come to that particular while in just 5 minutes. I'll just till now summarize whatever we discussed about formatting. That is what to write and how to write. Clear? हमने क्या बोला? हम हमारे फॉर्मेट्स बना लेंगे जो हर चैप्टर वाइज नियरली अप्लाई हो ही जाते हैं. There will obviously be once in a blue moon questions जिनके format might not get applied, but then those are such questions which we'll have to make a format on the own in the exam or just solve it step wise ताकि हमको मार्क्स मिल जाए. But majority questions will get format wise distribution, step 1, step 2, step 3, step 4. Correct? When it is your theory format, हमने format क्या डिस्कस किया?
facts of the case, applicable provision or provisions, linkage, and then conclusion. इतना clear है? Now going to Sarfaraz's question. How does one divide time in the 3 hours component? Like I said, like I have always, even in the past webinars told, my strategy always was to never read question number 1 in the beginning. I always used to read the question paper backwards. क्योंकि पीछे के क्वेश्चंस में हमको चूज करना है which question to attempt and which not to attempt. Question 1 I have to attempt. Does it mean that मैं वो starting के 15 minutes में नहीं पढ़ूंगा? No, it does not mean that. I will read it in the first 15 minutes, but maybe towards the end, so that I can plan how my time is getting divided in the examination. If you all understand, you all have 180 minutes for a 100 marks paper. And 100 marks को मैं divide कर देता हूँ as 70 and 30. Logically, if you ask me, you have 1.8 minutes per mark, right? But क्या तुमको तुम्हारा MCQ पेपर स्टार्टिंग के 15 minutes of reading time में पढ़ने मिलता है कि नहीं मिलता है? Do you get to read that in the first 15 minutes or do you don't get to read that in the first 15 minutes? You don't get to read that in the first 15 minutes, right? So आपको उसके लिए भी बफर टाइम सेव करना है, फिर वो केस स्टडी अंडरस्टैंड करना है, फिर उसको सॉल्व करना है और फिर तुमको लिखना है. So I normally would take 150 minutes for the entire paper is available for you to write rather than taking 180 minutes, which reduces your ratio to 1.5 minutes per mark. So if it is a 4-mark question, you should not give more than 6 minutes to solve that particular question in the exam. Are you clear with this or are you not clear with this? समझा कि नहीं समझा? So if you apply this ratio, 4 marks, 6 minutes, can I say that in the first 60 minutes, you should be done with 40 marks of your paper? हाँ या ना? And 40 marks, mind you, I am telling is the descriptive part. मैं अभी तक MCQs पे गया नहीं हूँ. And if I am not wrong, आपके 14 marks के सब questions आते हैं, right? You all get 14 mark of question. So if you see by that logic, 14 marks के 3 main question, which is 42 marks, should ideally get covered. 3 descriptive questions of 14 marks, right? अब तुम्हारे पास टाइम कितना बचा है? 120 minutes. Basically from 2 to 3, read out the extra questions which are there in the paper. Select your strategy of which question you'll attempt first, which question you'll attempt second, which question you'll attempt third, so on and so forth, and solve the first 3 questions. That is the first 3 main questions. Then at 3 o'clock, from 3 to 3, it's a 14 marker and 1.5 would be 21 minutes. I will still make it 3 to 3:25. Attempt question number 1, which is your compulsory question. Compulsory question may ideally you should do it in 21 minutes. I'm still giving you 25 minutes. तुम्हारा अब तक का कवरेज कितना हो जाएगा then? 42 plus 14, which is 56 marks. इतना समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है about time management? Then from 3:25 to exact 4 o'clock, you are supposed to do MCQs. MCQs is how many marks? 30 marks. Clear? तुम्हारा 86 मार्क्स का पेपर इन द फर्स्ट 2 hours कंप्लीट हो सकता है. अभी कितनों को ये एज अ मिथ लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल. दिस इज जस्ट टू से ऐसा एक्चुअली हो ही नहीं सकता. How many feel that? Aman, I will just answer your question in the next 1 minute.
after I just address this part? कितनों को ऐसा लगता है? Have any of you all written test series, even mock test till now? आपको ये feel आता है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता? Is it possible? Yes, it is very well possible. तो अब अगर तुम्हारा 4 o'clock तक MCQ सेक्शन के साथ 86 मार्क्स का पेपर हो जाता है, तुम्हारे पास कितने मिनट्स बचे हैं? 60 मिनट्स आर लेफ्ट एंड 60 मिनट्स में तो तुमको सिर्फ 14 मार्क्स करना है, which will maybe be the only question जहां पर आप सबसे ज्यादा अटक रहे हो, which you might be finding the most difficult. इसलिए वो एंड में रखा होगा आपने वो क्वेश्चन, राइट? नाउ जस्ट अड्रेसिंग वन थिंग बिफोर एक डाउट आए. मुझे सपोजिंग क्वेश्चन 2 का ए बी आ रहा है, सी नहीं आ रहा. क्वेश्चन 3 का ए आ रहा है, सी आ रहा है, बी नहीं आ रहा. मैं इसके लिए जगह छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा, इसके लिए जगह छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा. I will not think over there. I'll leave applicable space and move ahead. My intent is to finish 42 marks in the first hour, 25 minutes में question 1, and then 30 minutes, 35 minutes में MCQs. That is the intent with which I'm going. जो नहीं आ रहा उसके लिए जगह छोड़ छोड़ के आगे बढ़ूंगा. I will not waste my time in thinking इसका आंसर क्या. Because last के जो 14 marks बचेंगे उसमें मुझे ऐसे ही questions attempt करने, वो मैं half an hour में attempt कर लूंगा max. उसके बाद I am left with 30 minutes of buffer time. In this buffer time, I will go and complete every answer which I have left incomplete in between. When did I leave a question incomplete in between? यहाँ पर अमन का वो क्वेश्चन आ जाता है कि सर हमको ज्यादा टाइम लग जाता है एग्जाम में पेपर सॉल्व करने में, बिकॉज फिर पेपर्स आर लेंथी, तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है. तो वो जब ज्यादा टाइम लगता है, लीव दैट क्वेश्चन देयर, मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, and then in this buffer time come back and complete as many questions as you can. This does not mean कि तुम हर क्वेश्चन आधा आधा छोड़ दो, क्योंकि आधा आधा हर क्वेश्चन छोड़ दोगे तो लास्ट के 30 मिनट्स में भी you will not be able to complete your paper. सर प्रोविजन और फॉर्मूला को रिकॉल करने में टाइम लगता है. दैट इज व्हेन द फर्स्ट 15 मिनट्स कम इनटू एडवांटेज, राइट? तुम पढ़ोगे तभी तुमको प्रोविजन याद आना चाहिए या फॉर्मूला याद आना चाहिए. जो याद नहीं आ रहा हो तो तुम वैसे भी सेकंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन में रखोगे ना. जो याद आ रहा है उन्हीं को तुम सबसे पहले लिखोगे, जो याद नहीं आ रहा उसको तो तुम डिले करोगे. मे बी एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो याद ही नहीं आ रहा, यू विल लीव इट इन ऑप्शन. वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा? क्वेश्चन 1 याद नहीं आ रहा, इट्स अ 14 मार्क का कैलकुलेटेड रिस्क. उसके अलावा और वर्स्ट केस क्या है? यू आर एटलीस्ट इन द पोजीशन टू राइट अ 100 मार्क पेपर इफ व्हाट यू आर नॉट रिकॉलिंग डज नॉट कम इन क्वेश्चन 1. जो तुमको अगर रिकॉल नहीं हो रहा वो क्वेश्चन 1 में आता है, देन गॉड ओनली सेव यू आर गोइंग विद एन 86 मार्क स्ट्रेटेजी. But this strategy is the only strategy which will help you to attempt the question paper fully. Because मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा भी बोलते हुए सुना है कि सर 100 मार्क का पेपर लिखने से अच्छा है मैं सिर्फ 60 मार्क्स का पेपर बराबर लिख के आ जाता हूँ. Attempting 60 and getting 60 is very difficult. But attempting a 100 mark paper and then getting 60, probability increases. मैथ्स है, प्योर मैथ्स है. ज्यादा लिखोगे 60 आने की probability है, but 60 का ही लिखोगे 60 आने की probability is 0.01%. एंड 60 की कीमत वही लोग जानते होंगे जो दूसरे सब्जेक्ट में 40 एम करके जा रहे हैं. इफ यू आर एमिंग फॉर 40 इन वन सब्जेक्ट, यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ 60 इन अ सब्जेक्ट. क्लियर? समझा कि अब तक नहीं समझा? एंड लाइक आई ऑलवेज से टू ऑल माय स्टूडेंट्स, each student will have their own individual strategy at the end of the day कि उसको कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है. I used to love consolidation. I used to equally hate business combination. I started my paper by solving a consolidation question because I was confident मुझे आता है, मैं steps कर लूंगा. Some other student might think कि सर मुझे कंसोलिडेशन में ज्यादा टाइम लगता है तो मैं बाकी इजी क्वेश्चंस पहले कर दूं, कंसोलिडेशन बाद में करूंगा. दैट इज अगेन दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट्स पीओवी एंड दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट्स स्ट्रेटेजी. आई कैन ओनली गाइड यू विद अ टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी कि इतने टाइम में इतने मार्क्स का तुमको लिखना है. अभी तुम उसमें कौन सा क्वेश्चन डालोगे, दैट इज ईच स्टूडेंट विल हैव एन question which they might attempt as their first or second or third basis of what they are able to recollect in the exam situation. अगर कोई स्टूडेंट हेल्थ इशू की वजह से लॉन्ग आवर्स नहीं पढ़ सकता तो उनके लिए बेस्ट एफिशिएंट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? क्या 6-7 घंटे फोकस स्टडी से भी एग्जामिशन ला सकते हैं अगर डायरेक्शन सही हो? यस. जब आप 6-7 आवर्स बोलते हो, इट इज 6-7 आवर्स ऑफ इफेक्टिव स्टडी.
It is not 6-7 hours of study. तुमको 6 से 7 घंटे का रिकलेक्शन इन योर मेमोरी होना चाहिए. राइटिंग इन डिफरेंट सीक्वेंस इज द क्वेश्चन पेपर. यस, ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर में कहीं पे भी नहीं लिखा कि पहले क्वेश्चन 1 लिखो, फिर क्वेश्चन 2 लिखो, फिर क्वेश्चन 3 लिखो. I can write question 3, then I can write question 6, then I can write question 5, then I can write question 1. ये चलेगा. बट मैं 3A 3B लिखा, फिर 6A B C लिखा, फिर 5B और 5C लिखा, फिर I cannot write question 3 का C. Main questions can be written in any order, but once you start with a main question, the internal order of questions cannot be shuffled. तुमको C नहीं आता, जगह छोड़ के आगे निकलो, टाइम मिलेगा वापस उधर आके लिख लेना. बट 3A किया, 3B किया, फिर 5B किया, 5C किया, 5A और 3C बाद में करूंगा, नहीं चलेगा. You attempt each main question in the given sequence, but you can shuffle the sequence of your main questions in the examination. That is okay. 3 लिखो, फिर 6 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 5. That is okay. Does not make much of a difference. 3A के बाद 3B के बाद 5A के बाद 5C के बाद 6A B C, फिर 3C और 5B, नहीं चलेगा. Clear? If sub question belongs to one section, then how to answer? I didn't get your question. Can you just explain? मैं वही बोल रहा था, A B C है, फिर A B C को लाइन में ही लिखना है. 3A question 3B question 3C. There you cannot change the internal order of your questions. Clear? समझा नहीं समझा? There, I think on Prepka channel also, there is another webinar which I have taken in the past, which is about paper presentation skills, where I've even explained how I have written my paper in the last chunk of that webinar. So, जिनको मेरा paper देखना है, you all can just contact the Prepka team and they will share the link of that particular webinar with you all, which is even on YouTube. So, you all can even go through my paper कि मैंने कैसे लिखा है मेरा paper, what strategy I had adopted and how I had moved to a format of answering the questions. Mukesh is asking, sir, every sub question start a new page. ICAI को exam fees भरी है कि नहीं भरी है? पहले मुझे इसका आंसर दे. Have you all paid the exam fees to ICAI or not? If I'm not wrong, single group is 1800 and both groups is 3500, something like that is what I remember. Fees भरी है ना? Supplements where you can start every question on a new page. It is not a problem. You can even start every sub question on a new page. I too used to start every sub question also on a new page. It makes your paper look more presentable. हाँ, अगर आंसर 2 लाइन का ही है तो obviously it does not make sense that I write 2 lines, then leave the entire page, then start a sub question on a new page. But if I'm left with like 8-10 lines at the end, I would normally start it on a new page. Clear? इतना समझा कि नहीं समझा? Yes, Sumant, I'll just pass on the podium now to Mayur so that he can open up the webinar for Q&As. Mayur, back to you. इतना खाली समझा है ना तुम लोग को what we've just discussed. इसी तरह पेपर लिखते हैं, पढ़ते कैसे है वो मैं नहीं सिखा रहा, वो तुम मुझसे अच्छी तरह से जानते हो. हर सेक्शन के अंदर क्या क्या लिखा है वो मुझसे बेहतर तरीके से तुम लोग जानते हो, क्योंकि ऑल हैव स्टडीड इट राइट नाउ. मैं तो खाली यही बता रहा था तुमको कि लिखते कैसे. Clear? Yes, Mayur. Back to you now. Thank you so much. But I don't think so that all these students want to hear me. They are having lots of questions, specifically after this beautiful session. So, guys, we are opening the forum for Q&A. The Q&A will be for next 15 minutes. So, whatever questions you have, you can ask them in the chat box. We'll take it one by one. Or if anybody has a question, you can raise your hand and unmute yourself and you can ask your question there itself. Okay? I hope I'm clear, guys. May I have a thumbs up from all of you? Great, wonderful. So I think Sumant has raised his hand. Sumant, you can unmute yourself and ask the question to our Ankit sir. Hello, sir. Good morning. Good morning, Sumant. Yes. Sir, if subsection 1, 2, 3 belongs to same provision, means on that time how to write the answer, sir? Like this, section 3A is belonging to say SAR 240. It's a separate case study for 6 marks.
This also Okay. belongs to 240 is a 4-marker question. That is what is your question, right? तो अगर Yeah, वैसा yeah, हो जाए correct. तो how do we write it? Then in both cases, since both are independent questions in themselves, we'll have to explain the provision again. In What about in law, 3B. sir? Even in law, that is the same thing. But if supposing it's question 3A, and 3A has 2 sections of 3 marks each, Okay. which is on SAR 240 and SAR 240. Then again, you will have to write down a gist of the provision in 3A second part. Okay, sir. Okay, fine. Thank क्योंकि you. जितनी बार भी it comes, उतनी times you have to write. Many times we feel कि ये 5 आंसर पहले पीछे यही लिखा है, now we are again writing the same thing. It happens many times in the paper. But Okay, sir, unfortunately, okay, fine. we have to write it. Otherwise, ICAI is like, तुमको वहां पर हमने marks दे दिए ना, तो यहाँ पर if you have not written provision, be okay if you don't give you marks here. Okay, That's sir. Fine. Thanks. So who is the next in queue to ask their doubts? क्या किसी को doubt है ही नहीं अभी? Yes, Mukesh, you can unmute yourself. किसी को और कोई डाउट, दुविधा, दर्द, शंका, पीड़ा, कष्ट, प्रॉब्लम्स, इश्यूज? May I ask a question? Hello, sir. अभी इसमें दोनों में से किसने बोला है? Got two Okay, sounds. fine. Let that other person speak. I will speak later. Okay, Prabhu. So you can just, I'll take your doubts after Mukesh and gets his doubt cleared. Hi, good morning, sir. Good morning, Mukesh. Yes. सर एक्चुअली मेरे साथ इशू ये होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, जो आपने टाइम एलोटेड बताया उस टाइम के अंदर में मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाता है, और मैंने जो मॉक टेस्ट दिया है उसमें कभी भी मेरा 100% की अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ तीन घंटे में, मे भी वो 3.5-4 घंटे हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूँ सर? आपको आप जो आंसर्स लिख रहे हो उसको शॉर्ट में समराइज करके ही लिखना पड़ेगा. दैट इज द ओनली वे इन विच विल बी एबल टू मीट द डेडलाइन ऑफ 1.5 मिनट पर मार्क. क्योंकि उससे ज्यादा टाइम आप दे ही नहीं पाओगे. क्योंकि आप उधर अगर ज्यादा टाइम दे दोगे किसी क्वेश्चन में, आपके साथ ऐसा होगा कि आप पीछे के क्वेश्चन ही छोड़ रहे हो. व्हेन यू आर सपोजिंग अटेम्प्टिंग अ कंप्लीट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स, आप 6 मिनट की जगह उसमें 12 मिनट लगा रहे हो. आप ऐसा पॉसिबिलिटी ऑफ एक 4 मार्क का क्वेश्चन छोड़ रहे हो. मतलब आपने एक 4 मार्क का एक्स्ट्रा क्वेश्चन छोड़ दिया जो आपको लिखना है फॉर दी 100 मार्क पेपर. इसमें दिक्कत क्या होगी? आपका पेपर कम मार्क्स का अटेम्प्ट होगा, एंड व्हेन द पेपर इज अटेम्प्टेड ओनली फॉर लेस मार्क्स, आप 80 के स्कोर को टारगेट ही नहीं कर पाओगे. तो यू विल हैव टू लर्न टू समराइज whatever is there in that particular answer in the first 15 minutes. 15 मिनट में आपका क्वेश्चन सिलेक्ट करने, रेंज ऑफ आंसरिंग क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, प्रायोरिटी ऑफ आंसरिंग सिलेक्ट करना है, प्लस हर एक प्रोविजन याद भी कर लेना है इन द फर्स्ट 15 मिनट्स, बिकॉज दैट इज ओनली गोइंग टू हेल्प यू टू प्लान एंड फिनिश योर पेपर इन टाइम. वरना नो वन कैन हेल्प एनीवन टू फिनिश द पेपर, नॉट इवन मी. I can tell you from my personal example, I had finished my AFM paper in 1 hour 45 minutes. और मैं उसी टाइम के लिए DT में तड़प रहा था, बिकॉज इन DT I had to finish a 16 marker total income question in the last 10 minutes because paper was lengthy. Luckily मैंने वो पेपर कंप्लीट कर ही लिया था, मेरा सम भी टोटल इनकम का कंप्लीट हो गया था, बिकॉज आई न्यू दैट क्वेश्चन. मतलब एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स पता थे, राइटिंग स्पीड फास्ट थी इसके लिए. बट अगर आप नहीं कर पाओगे वैसा, यू विल एंड अप लूजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हायर स्कोर व्हेन यू अटेम्प्ट 100 mark papers. I can say that I have not even in my CA entire career, be it CPT or CPT में तो चलो नेगेटिव मार्किंग था, तो इसके लिए I had attempted only questions which I knew. In IPCC as well as in final, there has not been a single paper which I have attempted for less than 100 marks. मैंने पूरा 100 mark का हर एक पेपर कंप्लीट किया है, बिकॉज हमको एक बॉर्डर बना लेनी पड़ती है कि भाई इससे ज्यादा टाइम या इससे ज्यादा मैं इस आंसर में नहीं लिख पाऊंगा. एंड में टाइम बच गया, वापस आके लिख लूंगा. बट अभी भावनाओं में बह के, क्योंकि ये आंसर मुझे आता है, मैं भावनाओं में बह के एकदम इतना लंबा आंसर इसका लिख दूंगा जो मुझे शायद सिर्फ 4 मार्क्स देगा. बट उसके सामने मैंने आगे के 6 या 4 मार्क के क्वेश्चन छोड़ दिए, बिकॉज मेरे पास अभी टाइम नहीं. शुड नॉट हैपन लाइक दैट. द प्लान इन द फर्स्ट 15 minutes, दोज आर द मोस्ट क्रूशियल मिनट्स ऑफ योर पेपर. क्लियर? यस सर. सर जैसे मैंने कोई क्वेश्चन अगर स्टार्ट किया
और जैसे टाइम अलॉटेड है 4 मार्क्स के लिए 6 मिनट निकल चुका है, बट हमने उस क्वेश्चन को अभी फॉर्मूले वगैरह लिखे हैं, कुछ ज़्यादा सोल्यूशन हुआ ही नहीं है, तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव हो जाना चाहिए उस टाइम। Yes. I don't think फॉर्मूला लिखने में 6 मिनट तो निकल ही जाएगा. I think you would have नो, nearly done half. रिकॉल फॉर्मूला, समटाइम रिकॉल सम कैलकुलेशन, That is what I'm saying. The recollection has to happen in the first 15 minutes. स्टार्टिंग के 15 मिनट में एटलीस्ट मेंटली फॉर्मूला रिकॉल हो जानी चाहिए कि इसमें अच्छा दिस इज अ क्वेश्चन ऑन ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप्स. ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप में फ्लोटिंग का डेली इंटरेस्ट है और फिक्स्ड का इट इज टू बी माइनस द प्लस बेस्ड ऑन नेट सेटलमेंट रिसीव्ड या पेड. ये मेंटली दिमाग में बैठ जाना चाहिए. फिर यू जस्ट हैव टू डू कैलकुलेशंस इन थियोरी पेपर. लाइक अच्छा ये केस में ये इन्वोक मतलब दिस प्लस दिस हो सकता है. ओके, मेंटल नोट्स, मेंटल मेमोरी हैज टू हैपन इन द फर्स्ट 15 मिनट्स. तभी तो आप अपना प्रायोरिटी सिलेक्ट करोगे ना. जो आपको रिकलेक्ट नहीं होगा वो आप पहले अटेम्प्ट ही क्यों करने जाओगे. आप एंड में ही रखोगे वैसे क्वेश्चन. यस सर, थैंक यू सर. Yes, Mr. Prabhu, you had a doubt, and Rihanna, after him, will take your doubt. Yes, sir. I'm very grateful that you showed how to write an answer. I have very brief 2 questions. One is that how much portion is required for how many marks? Like if there is a 6 marker question or 14 marker question or 10 marker question, then how much portion should it be? And another thing that writing with pencil over the question paper is really attract any disciplinary action or not. So these are 2 questions. First, I'll answer your second question, whether writing on the question paper is allowed or not. That is again subjective to every center to center. Every center takes what stand. My examination time, my center was okay to allow us to write with a pencil on the paper, on the question paper. So that way, the center was cooperative, and then hence I was able to write down or make my jots. In some centers, they strictly don't allow it. So then you can't go against over there and say, ki nahi, humko to likhna hai. Because as per ICAI guidelines and rules, you are not allowed to write anything except your roll number on the question paper. So to answer your second question, it becomes subjective from center to center. So there is no strict answer कि भाई आप लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो. If you follow ICAI guidelines, so ideally आपको लिखने नहीं दिया जाता. But if your center is a cooperative center या the center examination chief is like okay लिख लो but don't copy or something like that, or if he sees any instance of copying जिसकी वजह से he would have said no, then that's a separate matter to be dealt individually. Clear? Yes, sir. First question, please. And what was your first question? Could you just reiterate again? Portion of answer for according to marks. Correct. So that again is very subjective. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है 4 mark question में भी a lengthy question and an 8 mark question might be very small. If you logically ask me, it should ideally be in the ballpark of 1 to 1.5 sides for a 4 marker question and around 2 to 2.5 sides for a 5 or 6 marker question. अभी तो शायद तक 6 marks से ज़्यादा बड़े question आते ही नहीं है, except for total income or a consolidation question or a business combination question. वरना everything is now getting restricted to 6 marks or max 5 marks. So could we say that for 4 marker questions or 6 marker question, a page full of answer is enough to get marks? If the provisions are crystal clear, if you have invoked the correct provision, correct conclusion, or correct steps and solution, even 3/4 of a page is sufficient. So there is no such concept of length. Your answer, like I said, has to be complete, not just correct. So in some answers, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा आंसर 2 पेज तक चल रहा है for a 4 marker. In some 6 marker question, you will feel like इसमें यही invoke हो रहा है, इसमें यही steps है. I solved it, I got the answer. Like your binomial model in AFM. If it's a 1 period binomial model, you'll just write the formula for P, you'll just get the value of the call and you got your present value. ये आंसर शायद तक half page में भी हो जाए किसी का. एक mergers का question आया for 5 marks, which is about find the swap ratio, EPS after merger, find out the market cap after merger, what is the free float after merger. इसमें parts बहुत है. So even if it's for 5 markers, one cannot say कि आपको 1 side में complete करना. It can even go for 3 sides. So it depends on what is the requirement of the question. Only thing you have to remember is question के answers जो भी आप लिख रहे हो वो हर aspect में complete होने चाहिए. अगर आपको लगता है कि ज़्यादा time जाएगा तो उतना पेज छोड़ दो और फिर वापस आ जाना. Yes, sir. Yes. Thank you, sir. Thank you. Clear? Yeah. Yes, Rihanna. Now we go to your doubt.
Hello, good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, for example, in audit, I was going through a question, and in that question, मुझे ऐसा लगा कि question शायद reporting के related पूछ रहा है, and at the same time, मुझे लगा नहीं, it was asking about the management overriding techniques. So ऐसा question अगर लगे कि दोनों में आपको doubt लगे कि ये पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है, तो उस question को हम कैसे handle करेंगे? या अगर हम उसको दोनों चीजें लिखेंगे तो फिर उसमें time जाएगा हमारा. Correct. But is that question, whatever you read as a question, क्या उसमें ideally वो दोनों situations merge हो रही है कि नहीं हो रही? हाँ, उसमें ICAI ने दोनों चीजें लिखी थी, बट शॉर्ट में करके लिखी थी. That is what, like when I said provisions का part मैंने explain किया, link the provisions and link it to the case. Just explain briefly what the provision is. Okay. So अगर आप सिर्फ ये एक लिखोगे या ये एक लिखोगे, आपका आंसर करेक्ट है, बट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि शायद तक ये पार्ट भी इससे लिंक्ड है या तो ये पार्ट भी इससे लिंक्ड है. So just in like 2, 3 or maybe 4 lines, just write it in the provisions part that for reporting, auditor should keep X, Y, Z pointers in mind, or auditor should do this if a modified opinion is coming in place. But when the management is overriding some particular technique, the auditor needs to do this. Then you link it to the question. In the given case, this has happened in the reporting part, and this has happened because management had overridden the technique and auditor did these procedures. And hence we conclude. Something like that. I don't know the exact question, so I will not be able to give you the exact answer कि actually क्या होना चाहिए, but logically सोचूं तो मैं शायद तक ऐसे लिखता कि management overriding techniques होता है तो क्या होगा, auditor की responsibility in reporting क्या आ जाएगी. This is the provision part. Now I link it to the exact case कि management ने ऐसा ऐसा किया और auditor ने ये processes follow की है, जिसकी वजह से उसके reporting पे impact आ सकता है. So hence the conclusion will be auditor should consider the effect on modification or on the reporting as the case may be. Clear? You need not exactly write ICAI language. कि उन्होंने तो 10 पेज का आंसर लिखा होगा, अपने को उतना नहीं लिखना. अपने को खाली क्रक्स पकड़ना है और उसको हमारे आंसर में रेप्लिकेट करना. सर, व्हाट इफ अगर ICAI ने सिर्फ रिपोर्टिंग पार्ट लिखा होता आंसर में एंड मैंने फिर दोनों लिख दिए तो फिर Then your answer is also correct. It's even complete. Like I said, एक आंसर तुम लिखोगे, कोई और दूसरा आंसर लिखेगा जिसमें 1+2 होगा, और ICAI ने सिर्फ 1 का आंसर दिया है. अगर 1+2 वाला भी लॉजिक सही है, प्रोविजन सही है, इन्वोक सही हुआ है, यू विल गेट योर मार्क्स. एक्चुअली वैसे केस में क्या हो जाता है, जब नॉर्मल स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं, एग्जामिनर को सिर्फ एक ही पार्ट इन्वोक होते हुए दिख रहा है. When he will then evaluate your paper which has both the parts, he will know that you have given an even more complete answer. आपको ज्यादा मार्क्स मिलने का पॉसिबिलिटी होता है. तो सपोज पिछले वाले को 2 on 4 दिया है, आपको शायद तक 3 on 4 या इवन 4 on 4 दे सकता है. सर, उससे ऐसा तो नहीं लगेगा एग्जामिनर को कि बच्चा कंफ्यूज्ड है, ये प्रोविजन आएगा कि ये प्रोविजन आएगा, तो उल्टा मार्क्स. बिकॉज़ हमने फैक्ट्स में ऊपर एक्सप्लेन कर दिया ना कि हमारा केस के फैक्ट्स ये है, इसमें ये प्रोविजंस अप्लाई हो रहे हैं. So that clarity of thought for the examiner will come at the first instance only when he reads your facts of the case. आपने अगर facts of the case या issue under consideration बराबर तरीके से explain कर दिया, उससे examiner will get a clear idea कि आपको पता है कि क्या लिखना है और क्या issue है और क्या क्या invoke करना है. ओके सर, AFM में भी एक डाउट है कि अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे या फिर हम डायरेक्टली आंसर स्टार्ट करेंगे तो फॉर्मूला लिखने के हमें मार्क्स मिलते हैं या हम सीधे आंसर स्टार्ट कर सकते हैं. That depends. अभी अगर वो क्वेश्चन एकदम लंबा क्वेश्चन है और 4 मार्क के लिए पूछा है, मे बी द फॉर्मूला माइट हैव ओनली से हाफ अ मार्क. बट अगर वो छोटा सा क्वेश्चन है जो 4 मार्क के लिए आया है, द फॉर्मूला विल कैरी मार्क्स. माय ऑनेस्ट सजेशन, हर बार एटलीस्ट फॉर्मूला लिख दो. Like in a chapter of portfolio, you cannot afford to not write a formula. उनको फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा. रिस्क ऑफ अ 2 सिक्योरिटी पोर्टफोलियो, आपको भले ही वो W1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो वेयर देयर आर 3 सिक्योरिटीज इन्वॉल्व, आपको लगेगा बहुत लंबा फॉर्मूला, W1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस W3 स्क्वायर सिग्मा 3 स्क्वायर प्लस 2 W1 W2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 cos 1 2 plus 2 W1 W3 sigma 1 sigma 3 cor 1 3 plus 2 W2 W3 sigma 1 sigma 2 sigma 3 cor 2 3. ये आपको बहुत लंबा लगेगा एज अ फॉर्मूला, बट ये उस चीज की रिक्वायरमेंट है तो लिखना पड़ेगा. लाइक इवन योर वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, आपका फॉर्मूला म्यू का है विच इज द मीन फॉर्मूला विच इज अ डिफरेंट फॉर्मूला फ्रॉम ए नॉर्मल मीन्स, जो है 2n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 1. और आपका सिग्मा का फॉर्मूला वहां पर तो कुछ भलता ही है, 2n1 n2 सॉरी
to n1 n2 minus n1 minus n2 upon n1 plus n2 the whole square plus n1 into n1 plus n2 minus 1. ऐसा भी फॉर्मूला है. Yes, Such sir. cases you can't ignore writing the formula. Okay. You even have a question on exponential moving averages, जहाँ पर बहुत बार एग्जाम्पल क्वेश्चन एक्सपोनेंट का वैल्यू दे देता है. ICAI ने पिछले 3-4 अटेम्प्ट में जब पूछा उन्होंने एक्सपोनेंट की वैल्यू नहीं दी है. सो यहाँ पर आपका फॉर्मूला लिखना बिकम्स मैंडेटरी 2/n+1 where n is equal to number of trading days of sample size. तो अगर आपको 30 डेज का एक्सपोनेंट ढूंढने बोला है सो योर आंसर ऑफ एक्सपोनेंट इटसेल्फ विल बी 2 divided by 31, क्योंकि उसी से आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का आगे का पार्ट कर पाओगे, वरना आप आगे का पार्ट कर ही नहीं पाओगे. In such Okay. cases, you will be required to write the formula, भले क्वेश्चन कितना भी लेंथी हो. And what can save you time is only your mastery over m plus m minus MRC and GT. आपको कैल्सी में इस चीज का मास्टरी होना चाहिए कि कब m plus कब m minus, how I can simultaneously use my m plus and my GT to get my answers. Yes, sir. So this is the only thing that will help you. अभी कोई क्वेश्चन ऐसा है EPS is equal to earnings upon number of shares. मैंने सपोज मर्जर्स के क्वेश्चन में ऐसा लिख दिया earnings after tax डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. कंपनी ए चल रहा है, कंपनी बी चल रहा है. I need not write the formula again either. EPS is equal to this upon this. मैंने लिख दिया earnings after tax divided by number of shares, therefore EPS. और मेरा आंसर इधर आ सकता है. So you'll have to devise these shortcuts कि कहाँ पर लिखना चाहिए, कहाँ पर नहीं लिख के भी उसको फॉर्मूला फिर भी मिल गया. Okay, sir. Thank you, sir. No problem. Anyone has any other doubts? Varna, I will have Mayur take over now. Hello, sir. Yes, sir, Faraz. Good afternoon, sir. Good afternoon. सर मेरा एक प्रॉब्लम है कि जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिकल और थ्योरी के जब सॉल्व करते हैं वक्त लगता है कि आंसर गलत जा रहा है कि मतलब छोड़ दूं, जैसे ट्राई करना चाहिए. फिर क्या होता है जैसे 10 से 12 मिनट पूरा लग जाता है क्वेश्चन करने में. अगर लगता है कि आंसर गलत हो रहा है तो उस टाइम में तो टाइम लॉस होता है. तो क्या माइंड सेट रखना चाहिए उस वक्त? कोई नहीं, कैल्सी पे एक बार वापस देख लेने का आंसर कैलकुलेशन करके. यू विल ट्राई टू आइडेंटिफाई वेयर यू गॉन रॉन्ग. योर कैल्सी इज ऑलवेज योर सपोर्ट पॉइंट. बहुत सारे सम्स अगर आप AFM या FR देखोगे कैल्सी पे ही सॉल्व हो जाते हैं. बट यू शुड नो हाउ टू यूज m plus m minus MRC एंड GT फॉर इट्स फुल यूज. मतलब बहुतों को इतना पता है कि m plus में डाल दो, m minus में डाल दो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट आप उससे एक पोर्टफोलियो का भी सम पूरा सॉल्व कर सकते हो कैल्सी पर ही. आपको खाली वो आना चाहिए. सो इफ यू नो दैट पर्टिकुलर थिंग और यू नो द पर्टिकुलर स्टेप्स, सो फिर क्या हो जाता है, यू कैन जस्ट इवेल्युएट एंड चेक वेदर योर आंसर इज कमिंग द सेम एफ यू डू इट ऑन द कैल्सी. एंड देन आपको आइडिया मिल जाएगा कि सही किया है कि गलत किया है. गलत किया है तो ऑब्वियसली इट्स लाइक रीडूइंग द होल थिंग, योर टाइम हैज गॉन फॉर इट. उसमें कोई आपको हेल्प कर ही नहीं पाएगा बाद में, क्योंकि उतना टाइम तो निकल गया अभी सॉल्व करने में. वैसा सो इस केस में क्या करना है, ट्राई टू कीप योर माइंड काम एंड पेशेंट एंड देन सॉल्व. घाई घाई में मत करो, क्योंकि घाई घाई में बहुत बार ऐसा होता है अगर आप सिटीजन का कैल्सी यूज कर रहे हो और पैट यूज कर रहे हो, घाई घाई में हम 121 लिखना चाहते हैं कैल्सी पे, कभी 121 की जगह सिर्फ 12 टाइप हो जाता है. और घाई घाई में हमारा कैलकुलेशन फिर इक्वल टू आंसर आ जाता है और पूरा आंसर गलत जाता है. तो बी काम, बी पेशेंट एंड सी योर कैल्सी एंड डू योर कैल्कुलेशन. सर बहुत बार क्या होता है मतलब एक क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट कंबाइन हो जाता है, तो मतलब कौन से अप्रोच शुरू करना चाहिए उसमें, मतलब किस कॉन्सेप्ट को पहले टैकल करना चाहिए? Whichever comes first, पहले क्या इन्वोक होगा तो पहले वो सॉल्व करना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड. इट इज लाइक सॉल्विंग अ सुडोकू पजल. आपको स्टार्टिंग पता होना चाहिए कि स्टार्ट कहाँ से करना है, उसके बाद ऑल आंसर्स विल फॉल इन प्लेस. बट अगर आपको ये नहीं पता कि स्टार्ट कहाँ से करना है तो देन इट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि आप अटक जाओगे बीच में. हाँ सर, इसका वही तो होता है. आंसर कहाँ से लाओ. हाँ. तो जब स्टार्टिंग के 15 मिनट्स है, जस्ट मेक अ मेंटल मैप कि इसमें पहले ये ढूंढना है, फिर ये ढूंढना है, फिर ये ढूंढना है. ओके, आई नो दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये ढूंढना है, ये ढूंढना है, ये ढूंढना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ढूंढना है. तो just make a mental map when you are Yes. reading the question.
तो उससे आपको एक बार आइडिया आ जाएगा कि चलो ये करना है, ये नहीं करना है, वैसे। सर एक Clear? समय क्या होता है वर्किंग नोट, हाँ सर क्लियर सर। सर एक समय क्या होता है वर्किंग नोट पूरा सही है, अप्रोच क्लियर है, बट फाइनल आंसर में गलत हो गया, तो ऐसे कितने मार्क्स देगा, मतलब उसमें मिलेगा ना, मतलब पार्ट मार्क, स्टेप मार्किंग? You will get marks for your steps, but अगर ये theory paper है, so just an insight for all the students, if your facts are properly written, your Yes. provisions are properly written, your linkage is proper, but you end up writing the wrong conclusion, you will get 0 marks. Clear? यहाँ पर स्टेप मार्किंग की कोई गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि आपने सब लिंक बराबर किया, सब प्रोविजन बराबर किए, और एंड में जाके आप रॉन्ग कंक्लूजन दे रहे हो, मतलब आपने इंटरप्रिटेशन ही पूरा गलत किया है, सो यू विल गेट अ 0. बट you have written correct facts, you have maybe invoked a wrong provision or something which is not related, an unrelated provision has been invoked, you linked your answer to that unrelated provision and gave your conclusion which as per the unrelated provision is correct, you will get marks, you will not get 0, आपको part marks मिलेंगे. तो कंक्लूजन तब ही लिखो जब 5000% श्योर हो कि मेरा कंक्लूजन सही है. That does not mean कि आप लोग हर आंसर में खाली फर्स्ट 3 स्टेप करके कंक्लूजन लिख के ही ना हो, क्योंकि फिर अगर ICAI चाहे तो आपको विदाउट कंक्लूजन सिर्फ हर आंसर में 1 मार्क ही देगा, क्योंकि आपने कंक्लूड नहीं किया. हाँ क्लियर? सर, ये सर क्लियर सर. सर और एक क्वेश्चन है सर. यस हेलो यस. सर, अभी तो टाइम ज्यादा नहीं है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जो RTP MTP रहता है और पास्ट ईयर क्वेश्चन रहता है, तो उसमें तो पास्ट ईयर क्वेश्चन तो बहुत है, तो कितना मतलब कितना साल तक करने से इनफ है, मतलब जैसे RTP MTP कर लिया रिसेंट, और पास्ट ईयर क्वेश्चन का जैसे 2-3 साल कर लिया, तो इसमें एग्जाम के लिए इनफ है ना? मतलब MTP में देख रहे जाओ तो यू हैव 2 MTPs पर अटेम्प्ट. यस सर. Right. So you need to see minimum 6 to 8 MTPs. For previous year, minimum 3 years previous year's papers, and RTPs minimum 2 to 3 years. This is minimum ताकि जो भी variety आ जानी है at least gets covered in your mind in the exam time. So this is like bare minimum. इसके अलावा तुम नहीं सोच सकते. Normally what people do is chapter खत्म होता है उसके बाद RTP देख के वो chapter के sums देख लेते. That also you can adopt as a approach. Chapter revise कर लिया, उसका RTP उठा लिया, 3 या 4 RTP, वो chapter के सब questions एक साथ देख लिए. हाँ सर, ये अच्छा है, लेकिन एक साथ कंप्लीट करने के बाद पूरा सब्जेक्ट उसके बाद करने में बहुत टाइम लगता है, और में भी ज्यादा टाइम भी नहीं रहता है, मतलब 1.5 महीना रहता है एग्जाम के लिए. रिजल्ट आते आते 1 महीना चला जाता है और 1.5 महीना रहता है एग्जाम के लिए. तो इतना टाइम पे सर कैसे मैनेज करें, मतलब इतना क्वेश्चन MTP RTP कैसे सॉल्व करें? When you are doing your studies at that particular time only you have to make a jot or make down notes कि मुझे ये question ही देखने हैं, बाकी नहीं देखने. You have to, when you are studying, prepare yourself for the 1.5 days itself. क्योंकि अगर तभी आपने 1.5 day का प्लानिंग नहीं किया जब ओरिजिनली पढ़ रहे हो तो आप 1.5 day में अटक जाओगे, आपको लगेगा मेरा कुछ खत्म ही नहीं हो रहा. तो हर चैप्टर से आपको 4 या 5 या 6 क्वेश्चंस मैक्स आइडेंटिफाई करके रखने, जिसको रिवाइज करते टाइम आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए, सो दैट बाय डूइंग दोस 5-6 क्वेश्चंस पर चैप्टर आप पूरा सिलेबस 1.5 दिन में कंप्लीट कर पाओ. लाइक इफ देयर आर थियोरी चैप्टर्स लाइक AFM के देखोगे सिक्योरिटाइजेशन स्टार्टअप फाइनेंस, उधर तो 5-6 क्वेश्चन कर ही नहीं सकते क्योंकि उधर 8-10 क्वेश्चन है. बट इन थियोरी क्वेश्चन लाइक प्रोफेशनल एथिक्स, क्लॉज 1 के आप 2 क्वेश्चन देख लोगे आपका काम हो गया, क्योंकि उसमें वही चीज रिपीट होनी है. क्लॉज 2 के 2-3 क्वेश्चन देख ले, वही रिपीट होना है. सो मार्क 1 क्वेश्चन पर क्लॉज और 2 क्वेश्चन मैक्सिमम पर क्लॉज एंड गो अहेड, जो एग्जाम टाइम देखना है. सर अभी एग्जाम के टाइम कंसोलिडेट कर पाओगे, वरना यू विल नॉट बी एबल टू कंसोलिडेट इन 1.5 day.
सर अभी एग्जाम के टाइम पे डेली कितना सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए? That depends what is your capacity to retain in a day. I was Sir, a नहीं, student मतलब दिसंबर में एक ही सब्जेक्ट होता था. I used to give 3 or 4 days per subject and finish it from start to end. मेरे से दिन में एक ही सब्जेक्ट होता था. I cannot do multiple subjects in a day. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि उनको मल्टीपल सब्जेक्ट्स करेंगे तो दे विल नॉट गेट बोर्ड. सो दैट अगेन इज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट. उसमें मैं एक स्टैंडर्डाइज टेम्पलेट नहीं बता पाऊंगा. Because मेरा standardized template, like I said, was do a subject, finish it in 3 to 4 days max, move to the next subject. वैसा. और बीच में एक दिन रिवीजन डालने का, चैप्टर खत्म, सब्जेक्ट खत्म होते हैं कि just glance it in one day. ठीक है सर, थैंक यू. If you are someone who can do multiple subjects a day, तो आप 2 subjects कर लो in a day, that way. But it obviously depends. मतलब अभी कोई थियोरी में स्ट्रांग होगा, कोई प्रैक्टिकल में स्ट्रांग होगा. Someone would prefer कि सब्जेक्ट खत्म कर ले, एटलीस्ट टेंशन दिमाग से जाए. So basis your thought process, you can do that particular thing. Clear? I am Okay, clear. sir. Sir. Rehanna has a question, sir. Can you show one example of facts of the case in audit? मेरा ऑडिट का पेपर का ही वीडियो इज ऑन द व्हाट डू यू से प्रेपकास्ट चैनल ऑन पेपर प्रेजेंटेशन. तो आप वो वाला खाली वेबिनार का एंड पार्ट देख लोगे, आपका काम हो जाएगा. क्लियर? Yes. Now back to Mr. Mayur. The stage is now all yours. Thank you so much. First of all, guys, one thing I want to tell you all, this session was specifically for paper presentation, and thanks to CA Ankit sir that he took care of all the doubts which were not only for paper presentation but for others also. So it was really good of you, sir. But to all the students, guys, remember these sessions are for a particular topic, and we should stick to it, because we have a doubt solving session separately for you all, where we will take only doubts, only your questions. Just like Sarfraz, he asked all the questions, whatever he is facing in terms of his preparation, which was good. I believe most of you were. So इसके लिए एक special session हमारा है doubt solving का, which will be next month now. Take care. Have a good day. Have a good day, guys. Bye.